Good morning, students. Today we are going to start new chapter, chapter 13, food production and management. Food production, as we all know, that for survival, all human beings, they need what? Food. So here we are going to see how the food produce and how it is managed. We all know that we are getting food from agriculture. The main source of food, or we can say the main resource of our food is agriculture. So we all know that food is one of the basic requirement for all living organisms. Man, along with most animals, obtain their food directly or indirectly from plants. We all know that we directly or indirectly depend on plants. Okay, so as we know the food cycle, or food cycle or food chain, that the plants, they come on autotrophs, they prepare their own food, and we living organisms, we come on what? Heterotrophs, because we eat plant and other animals. So we are consumer and plants are producer. They produce their own food. Okay. And that food we are consuming. So we are consumer. From ancient times, man has farmed the land for obtaining food. So we know that the from our ancient times, our ancient, they they used to do what? Farming. You know, farming for cultivating the crops and for obtaining food. Plants of a common variety, plants of a common variety grown in a particular area for a particular purpose is called crops. Like we all know that Chhattisgarh is famous for rice crop. We called also na Chhattisgarh is what? Dhan ka bowl of bowl of paddy और धान का कटोरा, है ना? हम लोग बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ को कि छत्तीसगढ़ क्या है? धान का कटोरा है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में कौन सी क्रॉप्स सबसे ज्यादा कल्टीवेट होती है? राइस, है ना? पैडी होती है। ठीक है, धान यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाउल ऑफ राइस. सो सिमिलरली वी नो दैट पंजाब, पंजाब जो है वहाँ पे क्या ज्यादा होता है? सरसों और वीट, है ना? वहाँ पे गेहूं और सरसों ज्यादा होता है. ठीक है, वैसे अगर हम बोलेंगे कि इधर कश्मीर तरफ, तो उधर क्या होता है? राजमा ज्यादा ग्रो होता है. तो डिपेंड करता है. तो यहाँ पे वैरायटी के अकॉर्डिंग हर एरिया में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स क्या होते हैं? ग्रोन होते हैं. और दैट इज व्हाट? क्रॉप. So growing different types of crop and their yield is called agriculture. Okay, so growing different type of crops like rice, wheat, maize, bajra, then different mustard and all, watermelon. So this is called what? The complete process is called agriculture. Now see, in present situation, in present situation, occupations and activities connected to agriculture as animal husbandry, poultry, fisheries, apiculture, and mushroom productions are also included under agriculture. Earlier, only the farming is known as agriculture, but nowadays, with agriculture, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, है ना? लाइक डेयरीज, जहाँ पे हम क्या करते हैं? जानवरों को, गाय, बफेलोज, गॉट, इन सबको पालते हैं. किसके लिए पालते हैं? मिल्क के लिए. तो एनिमल हस्बेंड्री, देन पोल्ट्री, पोल्ट्री एंड फिशरीज, एपीकल्चर. एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी का जो रस निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर. मशरूम प्रोडक्शन, मशरूम भी क्या होता है? आर्टिफिशियली ग्रोन होता है. मशरूम प्रोडक्शन, these are also comes under the agriculture. We can define agriculture science as technical knowledge about the management and mass production of different crops and animals useful for man is known as agriculture science. So what is the definition of agriculture? टेक्निकल नॉलेज. टेक्निकल नॉलेज मतलब ये होता है कि आपको उसके बारे में क्या हो?
पूरी डिटेल नॉलेज हो, है ना। एंड अबाउट द मैनेजमेंट, मतलब आप कैसे उसको मैनेज करोगे। एंड मास, और कितना मतलब मास मतलब होता है बहुत ज्यादा, जब हम प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं ना, दैट इज द प्रोडक्शन फॉर द लार्ज स्केल, फॉर लार्ज स्केल। सो आप कैसे टेक्निकली मैनेज करोगे और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करोगे डिफरेंट क्रॉप्स का फॉर सेलिंग और फॉर अर्निंग एंड क्रॉप्स एंड एनिमल्स, है ना, दैट इज यूजफुल फॉर मैन, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर साइंस। जैसे कि अगर मान लो अगर आपको क्या करना है, फार्मिंग करनी है ना, फार्मिंग करनी है, तो फार्मिंग अगर करना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए। टेक्निकल नॉलेज इन द सेंस कि आपको उसमें जो शीड्स हैं, शीड्स कैसे लेने हैं, उसको आपको लैंड कैसे प्रिपेयर करना है, फर्टिलाइजर या ह्यूमस जो है, ह्यूम्स है, वो कौन सा आपको यूज करना है, मतलब फर्टिलाइजर हो गया, आपको खाद कैसी डालनी है, लैंड कैसे प्रिपेयर करना है, शीट्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, है ना, उसमें इरिगेशन सिंचाई कैसे करनी है, उसके डिफरेंट टेक्निक्स क्या है, कब उसको हार्वेस्टिंग करनी है, देन उसको स्टोर कैसे करना है, सेल कैसे करना है। सो दैट इज व्हाट टेक्निकल नॉलेज। मैनेजमेंट मतलब होता है कि आप उसको कैसे स्टोर करोगे और सेल कैसे करोगे। मास प्रोडक्शन मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो, लार्ज स्केल में ग्रो करते हो, लार्ज स्केल में करते हो, ताकि उसको आप एज अ बिजनेस यूज कर सको, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर साइंस। नाउ टाइप ऑफ क्रॉप्स। So, type of crops. Do all type of crops grow in the same season? No. We all are familiar that in different season, different types of crops are grown. Different crops are grown and their yield are collected in different seasons. मतलब हम क्या करते हैं, हर सीजन हमारे कितने मंथ का होता है, 4 मंथ का होता है, मालूम है ना, ठीक है। तो मतलब जैसे 4 मंथ का होता है, तो हम इसके स्टार्टिंग में क्रॉप्स को लगाते हैं और एंडिंग में क्या करते हैं, उसकी कलेक्शन करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स एंड देयर प्रोडक्शन डिपेंड ऑन द फैक्टर्स सॉइल, रेनफॉल, लाइट एंड टेम्परेचर फैक्टर, ठीक है। सो क्रॉप्स की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है किस पे, सॉइल, सॉइल कैसा है, ब्लैक सॉइल है आपका, स्लोमी सॉइल है, किस टाइप का सॉइल है। फिर रेनफॉल, वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है या बहुत लेस रेनफॉल है, या मॉडरेट रेनफॉल है या मच रेनफॉल है। फिर लाइट, है ना, सनलाइट, साल भर जो है सनलाइट कैसे पड़ती है वहाँ पर, टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा होता है। तो डिपेंड ऑन दीज थिंग्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स। According to the season, we can differentiate the crops into three kinds. ठीक है? Now the first is Kharif and autumn crops. Now see Kharif, these crops, these crops need much water. Kharif crops need much water and heat. मतलब खरीफ क्रॉप को बहुत सारा रेन वाटर चाहिए और क्या चाहिए, वैसे ही सन हीट चाहिए, टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए। These are grown in rainy seasons, है ना, तो खरीफ क्रॉप कब लगाई जाती है, जब बारिश होती है, रेनी सीजन में। These crops are shown during monsoon, that is June, July month. So these crops are shown during monsoon in June and July month and reaped in October and November. तो जून जुलाई में इसको हम क्या करते हैं, शोन बोते हैं इसको, और इसकी कटाई रिप्ड मतलब इसकी कटाई कब होती है, अक्टूबर एंड नवंबर में। Main Kharif and autumn crops of our country are paddy. Main खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, पैडी, राइस, मेज, ग्रीन ग्राम दैट इज मूंग दाल, ब्लैक ग्राम उड़द दाल, ज्वार, मिल्ट्स, शुगर केन एंड कॉटन। Then rabi and spring crops. These crops needs moisture and less temperature. For rabi crops, we do not need much of water. These crops need only moisture and less temperature. These are grown during winter season. इनको कब लगाया था, ठंड में, जब बहुत ज़्यादा बारिश नहीं रहती है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश रहती है, जो आपकी सॉइल है वो मॉइस्ट होती है और टेम्परेचर भी कैसे होता है, लेस होता है। सो दीज आर शोन इन अक्टूबर एंड नवंबर एंड रिप्ड इन मार्च एंड अप्रैल। तो इन फसलों को कब लगाया जाता है, अक्टूबर एंड नवंबर में, और इसकी कटाई कब करते हैं, मार्च एंड अप्रैल। मेन रबी एंड स्प्रिंग क्रॉप्स आर wheat,
Bengal gram मतलब चना, wheat मतलब गेहूं, mustard, barley, lentils, uh, pigeon pea, arhar dal, and kusum and linseed, etc. Then zayat crops. Some crops yield more in dry weather, like in summer. These are usually shown in December to February, that is the starting of the summer season, and by March to May these crops are ready to reap. ये कटाई के लिए कब तैयार होते हैं? March to May. Some main crops are watermelon, muskmelon, cucumber, sunflower, and groundnut, etc. Okay. So today I am finishing my class here. Then method of agriculture we will learn in our next class.